गाइस एबे सुबुज समस्त को एबे सुनिला समस्ते वेरी गुड टिके सेटअप टिके नुआ अछि तो टिके गड़बड़ हो जाउची बट आउ टिके प्रॉब्लम गुटे अछि ओके तो आज आम डिस्कसन करवा कि कौन कौन आम ये करि परिबा तो आज डिस्कसन जदि आम करवा जदि आम देखा डिस्कसन करने तुमर देखा कौन टॉपिक टॉपिक आज रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट 1857 बेसिकली तार 3-4टा क्वेश्चंस क्वेश्चंस करेबी आपण मानकु जो माने आई होप समस्त मेंस दउछ इथर जाग्यासिनी वगैरह ये समस्त मेंस दउछ इथर समस्ते किए मेंस दउछ जाग्यासिनी विपिन सुजाता लोकनाथ किए मेंस दउछ समस्ते आपण मानक भितरे सरफराज विश्वजीत प्रदीप सब केमती अच्छा आउ केमती कौन जदि भी मेंस न दउछ तुम मानक पई भी ये टाइम वेरी इंपोर्टेंट एटा पई भी प्रिपरेशन करवा जरूरी सो आम जो देखिए रिवोल्ट 1857 रे 3-4टा मेजर क्वेश्चंस हो पारे ओके 3-4टा मेजर क्वेश्चंस हो पारे गोटे है कौन ना आपणकर मेजर मेजर कॉजेस मेजर रीजन behind revolt 1857 ये नॉर्मल क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस देन आउ गोटे क्वेश्चंस आसी पारे आपण माने जानि थिबे जदी रिवोल्ट 1857 is regarded as Revolt 1857 is regarded as the first war of independence. Revolt 1857 is regarded as the first war of independence. Okay. So by first war of independence by V.D. सावरकर कही right Revolt 1857 is regarded as the first war of independence by V.D. सावरकर क्वेश्चन सला do you agree justify क्वेश्चन सला do you agree so justify your answer
कि यार आंसर तुम्हें किसी कह ट्राई कर किसी ट्राई कर कि फर्स्ट है कि मेजर व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट 1857 दिस इज माने डैम इजी वन तुम्हें रिवोल्ट 1857 पढ़ियो माने ये पार्टा तुम्हें पढ़ियो ओके या विषय किसी डाउट नहीं देन सेकंड क्वेश्चन सला कि रिवोल्ट 1857 इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डू यू एग्री if agree justify if not agree you have to justify okay so both angle you have to take anyone if anything else you have let me tell me revolt 1857 is regarded as the first war of independence by according to BD Savarkar एटा ने आंडा देथिले सो बर्तमान आपण माने कहतु कि ये जो एक BD सावरकर जो कथा जो कही सेटा कौन ट्रू तुम्हें कौन से सहमत कि यहाँ को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहुपे जदि कहुपे केमिति कहुपे एनीवन जदि कहुपे केमिति कहुपे ट्राई कर जवाब देवाई सब ट्राई कर यार जवाब देले भल ओके सो यार रीजन मोर लेस समस्त जानी गोटे है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इकोनॉमिक रीजन देन आपणकर पॉलिटिकल रीजन सोशियो रिलीजियस रीजन देन इमीडिएट रीजन ग्रीज कार्टिलेज इमीडिएट रीजन ये सब आम मेजर रीजन आम जानीचे बट क्वेश्चन आसला कि व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर यू नो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कहार हुए इंडिपेंडेंस बेसिकली कहार हुए इंडिपेंडेंस कहार हुए एनीवन सो इंडिपेंडेंस गोटे हुए कहार ना जो मानक आम लड़ू जो एरिया जो कंट्री पे आम लड़ू सो मानि नियो इंडिपेंडेंस आम क्या करूँ गोटे नेशन देन क्वेश्चन आसला व्हाट यू मीन बाय नेशन आम ये दी तीन टर्म आम शुणी बट आम या डिफरेन्स जानीपारूनु नॉर्मली नेशन बेसिकली आम तीन टर्म शुणु नेशन स्टेट आउटेला कंट्री नेशन स्टेट आउ कंट्री कैन एनीबडी टेल मी किए कही पारे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और या भीतर किसी डिफरेंस नहीं is there any difference between these or is there is no difference between them anyone try करो जवाब देवा पाई अरे भाई कहीं किसी कहून कहीं अरे भी कुछ बोलिए कुछ बोलेंगे तभी हम तो कुछ कर पाएंगे आगे कुछ बोलेंगे हाँ जी कही जाओ
तो मुझे गोटे यार जिस्ट कहीदेवी देन तुम्हें ये आंसर को क्वेश्चन को केमी लिख मत जापर। Okay, I am waiting for your response, but you people are not giving any kind of response. Okay, I think you don't know. ये जानी ना नहीं अरे इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए स्टेट। ये तीन टा जाक समान ना तीन टा जाक अलग? व्हाट डू यू थिंक? ओके सो मु कही दउची आई होप तुम मैंने सब एते ध्यान दे नथिबे या ऊपर। आई एम टेलिंग यू सो नेशन पर कहबी कंट्री when a nation or when a state having well defined geographical boundary, it is called what? Country. So country is a geographical concept. Country is a geographical concept. If a nation having geographical boundary well defined, then we can call is country. Clear? Then state is a the head of the state. India head of the state kiye? President. Head of the state must be elected heithibe. That means political head. So political head, it is a political concept. Political concept. आम इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ द मोर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर. ओके, रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली नेशन, देन क्वेश्चन आसला नेशन. जदि गोटे नेशन होइबो देन ओनली nation is a cultural concept. Cultural concept. Nation is a cultural concept. When country having common consciousness, people having common consciousness, common cultural identity, they decided to come together to make a country is a nation. Then tell me, if there is a nation, जदि जड़े गोटे जगह नेशन अच्छी कनसेप्ट अच्छी नेशन, देन ओनली वी कैन से वी आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस. वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री इफ वी फॉट एज ए नेशन. देन क्वेश्चन आसला, सो आगे ये कनसेप्ट बुझ. देन क्वेश्चन आसला, इज देयर इज ए कनसेप्ट लाइक नेशन इन 1857? इफ एवरी लीडर who fought during this time is fighting for nation pai fight करथले, or is there any difference, or they are fighting for their own benefits? The question say to arise, is that they are fighting for whole India as a nation, or like today आज आमे देश रे किसी भी जाऊ आमे समस्त एकत्रित हो जाऊ. कहीं आमे बिलीव करचु ये दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, ये सब एरिया आम अंडर आम देश. आम देश आमे सीना चौड़ा करी कहूँ कि भाई ये आम देश जाऊँगी एवं सेठी भी किसी हेले आमको फील हुए, सेठी भी आमे फ्री फ्लो ऑफ आमे जाई परचु से एरिया को सब किछि करि परचु. बट नेशन एंड स्टेट देन कथा ला कि सही समय ना 1857 रे कौन सही भाया फिलिंग थिला देश रे. जदि आपण पढ़ी थिबे देले जानि परिबे. बट मु
माने आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव देखिए जदि देयर वाज नो नेशनल concept, there is no nation concept, no nation concept during that time. क्वेश्चन आसला कि सर जदि आप कहते नेशन कॉन्सेप्ट ना कहीं ताले बीडी के सावरकर कहते ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जदि नेशन ना यहाँ को इंडिपेंडेंस कहीं कहते ये क्वेश्चन आसुव तुम कौन लगुच सर ये कह सर आप कौन बेसी जानी बीडी सावरकर अपेक्षा से फ्रीडम फाइटर थे सी गोटे कही लिखी माने सी तो किसी भाविकी लिखी कौन एमती लिखी सेमती किसी माइंड आसूँ तुमको तुमकर कमेंट आसापी मत बहुत लेट हो बहुत कम कमेंट करुँच आपण मैंने समस्ते ट्राए करूँ कमेंट दवापाई इंटरेक्टिव सेशन हेल्ले बेटर लगे आम एंजॉय करवा अच्छा अरे किसी तो इनफॉरमेशन तुम्हें पाइब interaction हेले you will get some knowledge. Okay, so nation concept was not there during that time. That means they are fighting for their own cause, like Rani Lakshmibai for Jhansi, Rani Lakshmibai for Jhansi. से झांसी पाई लड़ुले कौन पाई ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोटा कि लॉर्ड डेलहाउसी आनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्रो रे झांसी को ब्रिटिश टेक ओवर कर नहीं एनेक्स कर नहीं थ्रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स getting or not? सो झांसी जदि नहीं गला रानी लक्ष्मीबाई कौन होता डॉक्ट्रिन लैब्स थ्रो निजर माने कई पुओ नथिले तांकर हजबैंड कर बेसिकली से समय डॉक्ट्रिन लैब्स थ्रो जदि आपनकर निजर ब्लड कई पुओ नथिबे निजर लीगल हेयर कई नथिबे आउ एडप्टेड सन माध्यम तुम्हें राजगादी संभाली परिबो नहीं तो ये गोटे चालाकी करी डेलहाउसी देखले से समय बहुत राजा अच्छा पुओ नहांती तो निज पुओ नहांती तो से लीगल हेयर को हटेयापाई राजगादी को हटेयापाई ये सब गोटे षड्यंत्र करथिले सो ये कौन कहले झांसी को नहीं गले से बहाने निजर पुओ नला ये कहले मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ये नारा देले मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का माने कौन का माने ये रिफ्लेक्ट होची ये केवल झांसी पाई ही लागुले ये केवल फाइट करते रानी लक्ष्मीबाई ये लिखिया माने कौन ये रिफ्लेक्ट होची कि रानी लक्ष्मीबाई फाइटिंग फॉर देयर ओन झांसी सी हैज नथिंग टू डू विथ ऑल अदर पार्ट ऑफ इंडिया she has nothing to concern she has no concern with nation. Clear guys? समझते क्लियर अच्छा सो सिमिलरली कंवर सिंह ऑफ बिहार ये जगदीशपुर राजा थिले तांको राजगादी हटे दिया होता तो ताको पेंशन कम मिलता तांको पेंशन पे से फाइट करते हजरत महल
तांको पुओ को राजा बनया पई नवाब बनया पई लखनऊ रे सी लड़ाई करथिले सो एवरीवन एंड आउ गोटे कथा या पर आउ गोटे क्वेश्चन सेटा करिवा तो हजरत महल लड़ी थिले तांको निजर कॉज पई एटू कौन रिफ्लेक्ट हो व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट कि everyone is fighting for their own cause for their own territory for their own benefits so that is the reason why we cannot call you have to give these examples ଯେତେଗୁଡ଼ା ସବୁ examples ଅଛି ଯେମିତି ନାନା ସାହେବ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କାନପୁର ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାନପୁର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ तो ये सब एग्जांपल्स में सब दब एवं यही एग्जांपल देला परे तुम्हें जस्टिफाई करिवो यस तुम्हें आउटराइटली मना करिवनी आउटराइटली कहबनी कि भाई एटा किछि नथिला दिस इज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नथिला ना सेमति नो तुमने कोन कहबो we cannot directly say that it is the first war of independence because of these are the reason जो reason कहली मु you can say they fighting for their independence for their own cause that you can say for their own cause means जेमिति झांसी पाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी पाई रानी लक्ष्मीबाई लड़ुले तो ये तांकर झांसी रो नेशनलिज्म पाई लड़ुले नेशनलिज्म फॉर झांसी गेटिंग or not सो एटा संदर्भ में तुम्हें कही पारिबो सो पूरा जेहेतु गोटे हिस्ट्रिकल पर्सन लिखिजंती जने फ्रीडम फाइटर लिखिजंती तांको लेखा को आमे आउटराइटली मना करिवुनु आमे एक्जाक्टली रिजेक्ट करिवु नहीं या पूरा 100% समर्थन दे देबो काइना तुम 100% समर्थन भी दे देबो ता माने जानिबो तुमे कि तुमरो या विषय नॉलेज बहुत कम यू आर वेरी लेस नॉलेज तो तुमे कहबो दे आर वी in the present sense we cannot call it is a nationalism or we cannot call it is a first war of independence but we can call it is a first war of independence for their own motherland ये conclude करिवो एवं ओन मदरलैंड रे ये एग्जांपल दबो झांसी रो नेशनलिज्म पे ये चाहूतले हजरत मोहन लखनऊ रो नेशनलिज्म पे चाहूतले कानपुर रो नेशनलिज्म पे नाना साहेब लड़ीथिले तुमर बिहार पाई कंवर सिंह सी लड़ी बेसिकली यही सब एग्जांपल गुड़ा तुम्हें दे पार और या थ्रो रे तुम्हें जस्टिफाई करि परिबो सेहि मोर क्वेश्चनटा थिला देखिबो जस्टिफाई डू यू एग्री तुम्हें एग्री ना हो इनिशियली एग्री ना हो ताको जस्टिफाई कलो राइट anyone having any doubt let me know yes Delhi re Babar san yes Niharika you are right ओके ठीक अच्छे सो बर्तमान आम देखा
या परे मु क्वेश्चन देली आमे ये पार्ट देखुथलु या पर गोटे क्वेश्चन अच्छे आम देखू सो प्रोब्लेम होती कौन टी आसूना तुम राइटिंग येटा तो सहीटा देखीद कौन हैंग हो जाइए तो तुम्हें खाली येटा देखी दियो सो क्वेश्चन है The revolt 1857 was a cumulative effect of the character and एटा ये देखा जाउ नथियो त ठीक तथापि देखा जाउ तुमको चलिबो. So the revolt 1857 was a cumulative effect of the character and policies of the colonial rule in India. Examine 250 words रे 15 मार्क्स किंबा 20 मार्क्स रो क्वेश्चंस आसीबो. तुम्हें वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करंतु आ सांग साथी सहित शेयर करंतु so that बहुत सारा इनफॉरमेशन भी पाई जीवो. मु एई क्वेश्चंस माध्यम रे रिवोल्ट 1857 ही तुमर पूरा कंट्रोल कंप्लीट करे देबी. जी बिल्कुल भी जानि नथिबो समहाओ ता पाखरे आईडिया आसी जीवो कि रिवोल्ट 1857 कोन ता विषय रे आईडिया आसी जीवो. तो रिवोल्ट इंट्रोडक्शन एमती दबो. ओके इंट्रोडक्शन ता सब भलो ही छ दरकार. इंट्रोडक्शन जेते तुमर भलो क्वालिटी रे हबो सेते तुम भलो मार्क इंप्रेशन गोटे भल पड़ो. जी जी कॉपी चेक कर मानिने तुम्हें निजे कॉपी चेक कर कहार कॉपी देखुच तुम्हें कौन आगे देखो तेरे स्टार्टिंग फेज है ना कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग तो से भाया इंप्रेशन तुम फर्स्ट भल हवा दरकार. सो रिवोल्ट 1857 started on 10th May when the company's Indian soldier at the Meerut rebelled and called the Sepoy Mutiny by British. It is now recognized as the first war of independence against British rule. जोटा कि आम या क्वेश्चंस भी गोटे करदेलु बट सेटा कहब. सो 10th में ये सब दिस रिवेलियन वाज ए मेजर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. येस वी कैन कॉल इट है ना. कॉलोनियल एग्नेस्ट थिला गोटी अपोजिशन थिला अलग अलग समस्ते लड़ुले अलग अलग कज पर लड़ुले अपोजिशन गोटे थिला जे कि ब्रिटिश. यही सेन्स रे आमे कहि परिबा कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यही सेन्स रे भी कहि परिबा समहाउ जो इंडिपेंडेंस कांसेप्ट कथा कहूचे. सो this rebellion was a major anti-colonial movement against the oppressive aggressive imperialism of the policy of British. In fact, it was an economic, political, and social struggle against British rule. Economic, political, and social struggle against British rule. गोटे सेकेंड पिलाने टिके न लेखिले भल लगे तो से रईटिंग से कौन गोटे हो जाइए आउ गोटे उपाय करी तुम रईटिंगटा करदेवा देखा.
ओके सो एबे तुम कामटा आईगला ये आम देखुले सो रिवोल्ट 1857 वाज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट जोटा कि कैरेक्टर एंड started in 10th May when the company Indian soldier at Meerut rebelled called the Sepoy Mutiny by the British. So it was now recognized as the first war of independence against the British rule. Now you will get some kind of writing वगैरह भी पाई परियो सब किछ असुविधा नहीं एथरे. So this rebellion was a major anti-colonial movement against the aggressive imperialist policy of the British. In fact, it was an economic, political and social struggle against the British rule. Okay, एथि पर आमे पढिथिले. So then oppressive character and policy of the colonial rule in India. First देखिबा कोन कोन पॉलिसी थिला. ब्रिटिश रो कोन कोन पॉलिसी थिला सेटा आमे देखिबा. So British policy देखिए यदि the nature of colonial expansion through annexation become a major source of discontent. Nature of colonial is a very important point. Expansion. Nature of colonial expansion. This is very important. So their policy of annexation called Doctrine of Lapse led to a number of independent kingdoms being annexed to the British Empire, and these are states that these are the states where that are enjoyed British protection, but their ruler had died without leaving the natural heir. माने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कथा कहउची. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉलिसी. डॉक्ट्रिन माने गोटे सिद्धांत. लैप्स माने तुमे जदि निजर लीगल हेयर नथिबो. लीगल हेयर माने निजर पुओ, निजर जन्म करिथिबा पुओ जदि नथिबो ताले तुमर ये राजगादी जीवो. माने ये गोटे भल टेक्निक आसिक से माने अप्लाई कले. किए करथिले लॉर्ड डेलहाउस. सो सेइथरे से सतारा प्रथम स्टेट नेले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे सतारा, नागपुर. सतारा बेसिकली महाराष्ट्र रो सतारा, नागपुर, देन झांसी नेले एंड संबलपुर, जेतपुर. ये सब धीरे धीरे वन बाय वन टेक ओवर करी चलले एवं दैट लीड्स टू बेसिकली वाइड स्प्रेड. दैट लीड्स टू वाइड स्प्रेड तुमर लोकों को भितरे कन्फ्लिक्ट हैला. दिस इंटरफेरेंस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी was disliked by many Indian rulers. The policy of annexation also affect soldiers, crafts, people and even the nobles. So ये problem create करिया लगले. Even the traditional scholarly and priestly classes lost their patronage which they were getting from these rulers. Okay, so ये गोटे तुमरो इशू थिला. देन देखिबा फर्स्ट थिला कौन ना तुमर पॉलिटिकल पॉलिसी है ना. ब्रिटिश रो या एंटी कॉलोनियल पॉलिसी कोई माने ब्रिटिश रो जो देखि तागर पॉलिसी थिला एनेक्सेशन पॉलिटिकल पॉलिसी. देन इकोनॉमी पॉलिसी. देन कौन ना इकोनॉमी पॉलिसी. इट कॉज्ड द डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी and its subordination to the British economy. Okay. So the Indian economy now suffered under the British policies since they worked against the interest of the Indian trade and industry. Indian handicraft completely collapsed. Very important एटा धीरे धीरे जो जमींदार सिस्टम वगैरह आसला, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसला, ये सब धीरे धीरे ये ऑक्युपाई करने पूरा ब्रिटिश को, पूरा इंडिया को ऑक्युपाई करने जमते कि आमर इंडिया जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थिला सी खत्म हो गला. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री खत्म हो गला परे लोक मान करिवे कोन, लोक मानकर उपाय नथिला किछि. So the British sold cheap machine made clothes in India which destroyed Indian cottage industry. से माने कौन कले इंडिया रो मटेरियल नेले जाइए ब्रिटिश रे मशीन रे बनेले. इंडिया रे नॉर्मली था मशीन मेड न थाए. इंडिया रे जो वर्कर माने बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थाए.
हाथ बुणा हाथ द्वारा जहाँ भी किसी हो पार्ला से गुड़ा करते बट ब्रिटिशर्स बेसिकली से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो से मशीन मेड प्रोडक्शन बनाते मशीन मेड प्रोडक्शन जो बेसिकली इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप है इट ऑल्सो लेफ्ट मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन अनएम्प्लॉयमेंट millions of craftsmen unemployed okay so ये थिला तुम्हार इकोनॉमिक कजेस देन ब्रिटिशर्स आल्सो इम्पोज्ड heavy duties माने taxes heavy taxes on Indian made industries now they could reap huge profit as there was no competition for their goods thus the British drained India of her wealth and her natural resources the colonial policy of intensifying land revenue the colonial policy of intensifying land revenue demand led to large number of peasants losing their land led to large number of peasants losing their lands. The permanent settlement of Bengal, this is very important. Permanent settlement of Bengal and Bihar and Odisha did not recognize the hereditary rights of the peasants on the land. And if they failed to pay 1/10/11 of the entire produce, their property could be sold off. Property नहीं जाउतले जमी जगह छड़ी नउतले तो ये रिफ्लेक्ट करोची कि ब्रिटिश केमिति रूल करथुला देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एमाने आसिले इंडिया जो इंटरनल अफेयर्स रे जोंडे कि रिलीजियस आइडियोलॉजी सेही थिरे से माने इंटरफेयर करबा को लागिले जेमिति सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट सती हो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो एंड लास्टली विडो रिमैरेज एक्ट एंड एजुकेशन फॉर वुमेन जोंडे कि बहुत सारा मात्रा लोक पसंद करनुथिले एवं मेनी जो मेड मेनी पीपल अनहैप्पी एंड द मिशनरी वर्क जोंडे कि installed apprehension among the missionary Christian missionary 1813 पाखरु Christian missionary को allow कला इंडिया आसिया पई एवं 1833 पाखरु तांको लैंड एलोकेशन हला लैंड राइट्स दिया गला से माने लैंड परचेज करि परिबे एवं एठी सेटल होई परिबे तो ए जो सिचुएशन रुए इंडियन माने एप्रिहेंशन ले डरिले कि ए माने आसी कि हमर धर्म को नष्ट करचंती the religious settlement of the Sepoy were hot in 1806 in the Madras presidency. The Hindu were asked to remove their caste mark from the forehead जो लगे थी and the Muslims are asked to trim their beards. Discontent in the army. The Indian soldiers are not given post above that of Subedar. Some Sepoy wanted special bhatta allowances if sent on overseas duty. Okay, सुबेदार ऊपर को पोस्ट ही दौन इंडियन सोल्जर मान को खाया पीवा को प्रॉपर मिलू नाला से भाया फैसिलिटी मिलू नाला एवं से मैंने चाहता कि ओवरसी ड्यूटी स्पेशल भत्ता भी दि जाऊ केते केते जगह तो पैसा ही दिया न था स्पेशल भत्ता तो दूर कथा तो ये ट्रीटमेंट करते सिपाही मान को एंड दे आर पेड सैलरी लेस देन द इंग्लिश मैन येस ऑब्वियसली से इंग्लिश मैन तुलन में कम सैलरी दि जाऊला से कौन है ना सिपाही जोटे कि मोराल धीरे धीरे डाउन है एंड आउ सबुठ इम्पोर्टेंट है कौन ना एडमिनिस्ट्रेशन जो तार करप्शन
ह्यूज करप्शन। ओके, ये कंपनी तुम देखिए कि चाहे पुलिस हो, ऑफिशियल्स हो, लॉ रैंक रो पुलिस हो, ये सब धीरे धीरे कौन ना ये करिया चले, पुलिस हो, ऑफिशियल्स हो, लॉ कोर्ट्स, ये द मेजर कज ऑफ डिस्कंटेंट या भीतर यहीटा बहुत बड़ ये थिला। सो लोके फाइनली कहले भाई ये नहीं होगा, हमें हटाना पड़ेगा। देन लास्ट 2 पॉइंट जोटा कि तांकर रिलीजियस पॉलिसी, सॉरी फॉरेन पॉलिसी एंड इमीडिएट पॉलिसी आमे। सो वन बाय वन केमती आमे देखिलु एक्युमुलेशन ऑफ जोटा कि पॉलिसी। The revolt succeeded. The revolt succeeded with certain outside events in which the British suffered a serious losses. The first Afghan War 1838-30-40. So इस तरह कौन है ना morality very important. तुम्हें जहाँ भी करो लाइफ रे, तुम्हें तुम्हारे जदि प्रिपरेशन करुच समस्ते प्रिपरेशन ने तुम्हारे जो मोराल अप नथिबो ताले तुम्हें किसी भी करि परिबोनी। तुम लाइफ रे जदि तुमार कॉन्फिडेंस नथिबो तुम्हें बहुत छोट छोट जिनस अचीव करि परिबो नाही। आ तुम्हें कॉन्फिडेंस थिले, तुमार भीतर कॉन्फिडेंस थिले बहुत बड़ बड़ जिनस भी तुम्हें अचीव करि परिबो। तुम लाइफ रे बहुत बड़ बड़ जिनस भी अचीव करि पारे तुम भीतर जदि ट्रस्ट थिबो, तुम निज उपर भरोसा थिबो, कॉन्फिडेंस थिबो, ताले तुम्हें बहुत किछि अचीव करि परिबो। तो सही अनुसार बेसिकली ये गोटे तुम्हें देखि ना तुम घर पाखापाखि किए जदि सक्सेसफुल हो गला तुमको केमती लगे? घर पाखापाखि जदि किए सक्सेसफुल है तुमको लगे कि भाई मु भी करि परिबी है ना, सीए करि पाला तो मु काई करि परिबिनी। आमे दूररू देखु जे भाई से माने किछि गोटे भगवान पाखरु गोटे अलगा ये पाई आछंती ना, सेमती किछि समस्ते अचीव करि परिबे, जे जोटा चाहिबो करि परिबो। देन अफगान वार, पंजाब वार जोटा कि सेकंड पंजाब वार फर्स्ट पार्ट रे देखियो ब्रिटिश हारी जाइथिला। एंड देन क्रिमियन वार, क्रिमिया रे भी ब्रिटिश जाइथिला सेठी लड़िया करिया पई, सेठी भी ब्रिटिश रो परास्त होइथिला। तो से थ्रू बेसिकली जोटा कि स्ट्रॉन्ग ए थ्रू गोटे फील आसिला कि ब्रिटिश एते स्ट्रॉन्ग नुहे कि ताको हरई हबो नाही। जो जो इनविंसिबिलिटी आगुर गोटे पृथ्वी रे चलता कि ब्रिटिश को केबे हरई हबनी, ब्रिटिश है भगवान का आशीर्वाद नहीं आसे से मैंने से भाया कहते निजक कि भगवान आम तुमको उद्धार करने आसु इंडिया को आसे मैंने कहते आम तुमको उद्धार करने आसु, ये कनसेप्ट थाए। सो से ये गोटे पार्ट थिला। तो कॉन्फिडेंस से लोक आसीगल भाई एम को हरई हेनी, सेमती किसी ना एम अलग जगह हरई देते आम कहीं हरई पार्बनी। एमती आम घर पाखापाखि साई पड़िशा ये पाई जाऊँ तो मुझे कहीं पाइबी सिलेक्शन हेबी, मुझे कहीं ओएस हो पारि, सो मु भी ओएस हेबी। ओके, सो ये गोटे ये आसी जाए। देन इमीडिएट पॉलिसी, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस ओल्ड फैशन मस्केट्स ब्राउन बैग्स बाय द एनफील्ड राइफल। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन मस्केट एंड ब्राउन बैग सेटा को हटई देगी एनफील्ड राइफल आनले। यहाँ गोटे बहुत बड़ माने इमीडिएट कजेस कहुँ कहीं जो लोडिंग करा जाए एनफील्ड राइफल जो लोडिंग करा जाए गोटे कार्ट्रिजेस थाए। ओके, कार्ट्रिजेज सिस्टम से कार्ट्रिजेज को माउथ रे काटिकी ताकू काढ़ी पूरा जाए। ओके, ये रे पूरा जाए। सो जो काटिवा सेटा कह कि ग्रीज कार्ट्रिजेज थिला, ग्रीज रो कार्ट्रिजेज थिला, सेटा ग्रीज रे कार्ट्रिजेज थिला माने तुम्हें कौन ना तुम्हें कौन करि परिबो ताकू काढ़िया। सो किछि किछि अछंती से जो ब्रिज कार्ट्रिजेज हेइथिला, ग्रीज कार्ट्रिजेज हेइथिला ग्रीज कार्ट्रिजेज होता से कौन ना गाई आउ घुसुरी, गाई आउ घुसुरी मांस होता बोली गोटे र्यूमर चलला। से गाईटा आम हिंदू बहुत पवित्र माना जाए, आउ मुस्लिम पिग भी टाबो थाए। तो ये सिस्टम जो टिके चाहे बहुत मुस्लिम आउ इंडियन सिप पूरा ओवरऑल ये बोले चलो ये आंके तो सिपाही भितर 29 मार्च 1857 ये गोटे कनफ्लिक्ट है और ये कनफ्लिक्ट जो बेसिकली सिचुएशन क्रिएट है। सो दीज आर द मेजर कजेस, मेजर रीजन। देखो ये पूरा गोटे सिस्टमेटिक वे तुम्हें ऑपरेसिव कैरेक्टर ऑफ क्वेश्चन है। ये खाली गोटे दिन नुहे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट माने ये बहुत वर्ष धरी ये चली ये चलला फाइनाली ये रिवोल्ट है। रिवोल्ट है कौन छोटिया जिनपाई है जमी आम असहयोग आंदोलन करूँ। असहयोग आंदोलन में गांधीजी लुण को नेले, लुण गोटे छोटिया इश्यू थिला बट छोटिया इश्यू गोटे बहुत बड़ मूवमेंट हो गला।
से भाया ये छोटिया इश्यू थिला कौन ना ग्रीज काटिडेज से गोटे निआ थिला स्पार्क से स्पार्क जो लोक जो राग थिला एकाथरे चालो माड़ी चालो है ना नहीं तो ये समय समय रे एमिति हुए सो कनक्लूजन जो देखा सो रिवोल्ट 1857 ये गोटे प्रथम साइन थिला कि इंडिया वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल ये जिनस जो तुम्हें लेखिपार के गोटे क्वेश्चंस कहली या पूर्वर जी वीडियो लेट्रे देखुच पूर्वर वीडियो पूरा देखीदेव सो कहीं तुम्हें बहुत सारा इनफर्मेशन पाइब से लिखिदेव कि यहाँ को कहीं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहुला कौन ना कि रिवोल्ट 1857 वाज द फर्स्ट साइन ऑफ दैट इंडियंस वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल्स इंडियंस तांको भितरे सिमिलारिटी नथिला लड़ू नथिला अलग अलग कज पे लड़ुले बट तांको भितरे गोटे सिमिलारिटी थिला जरूर माने सिमिलारिटी माने कौन ना गोटे अपोजिशन अपोजिशन किए ना ब्रिटिश समस्त मान and are ready to stand united for this cause. So even though they failed to achieve their objective, they succeeded in showing the seeds of the nationalism among the Indians. This is the positive तुम्हें लेखि पारिबो ये केसेस रे ओके तार किसी डाउट अछि आ ऊपर यदि जार डाउट अछि यू कैन आस्क मी let me know if any doubt you have okay जमती आउ या रिलेटेड आउ किसी क्वेश्चंस कहीं रिवोल्ट 1857 जो है ये केवल गोटे रिवोल्ट नथिला या पूर्वर नंबर ऑफ रिवोल्ट होता ये गोटे गोटे छोट गोटे चिंगारी थिला ओके ये चिंगारी जो बहुत बड़ रिवोल्ट है 1857 रे बट या पूर्व चिंगारी माने कौन बेसिकली या पूर्व बहुत सारा चिंगारी थिला माने रिवोल्ट 1857 पूर्व स्टार्टिंग फ्रॉम तुम सन्यासी रिवोल्ट टू सांताल रिवेलियन सन्यासी रिवोल्ट टू सांताल रिवेलियन पर्यंत 1757 परठू ये सब कंटिन्यूअसली चली ऑल ओवर इंडिया रे बट लोकाली थिला दीज आर बेसिकली एका थरे बहुत सारा जो उठी थिले एटा प्रथम थर पे होता बेसिकली ब्रिटिश पूरा डरी जाइथिला बट या पूर्वर नंबर ऑफ ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग होता तार रिलेटेड जब गोटे सो ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट एंड अदर पॉपुलर अपराइजिंग से गोटे क्वेश्चन देखा देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इवन दो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर टाइम एंड स्पेस माने कौन जोड़ा कहती ट्राइबल अपराइजिंग ऑल ओवर इंडिया रे ऑल ओवर इंडिया रे डिफरेंट डिफरेंट जगार राइट डिफरेंट डिफरेंट स्पेस रे बट ये कहूँ कि जो ऑल ओवर इंडिया रे जो जो लोकाली ता भीतर बहुत सारा सिमिलारिटी अच्छी ओके सो कौन तार इंट्रोडक्शन देखा सिमिलारिटी इन टाइम एंड स्पेस ट्राइबल मूवमेंट अंडर ब्रिटिश रूल और मोस्ट फ्रिक्वेंट थिला militant and violent for all movement थिला so the tribal movement can be categorized into mainland tribal गोटेला mainland tribal माने मेजर लैंड रे आ गोटेला फ्रंटियल ट्राइबल रिवोल्ट फ्रंटियल माने कौन नॉर्थ ईस्ट पार्ट फ्रंटियल माने जो देखो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ओके सो गोटेला mainland माने आम प्रेजेंट mainland आ नॉर्थ ईस्ट छाड़ी दियो तो ये दी प्रकार तुम्हें देखि पारथलो सो नेक्स्ट देखा तांकर द अपराइजिंग स्पार्क्ड ए नंबर ऑफ फैक्टर्स द अपराइजिंग स्पार्क्ड ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से गोटेला मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट ऊपर देखा गोटेला बहुत सारा ये अच्छी तार मेनलैंड दी गोटेला कि लैंड सेटलमेंट जो आगु ट्राडिशन थिला कि जॉइंट ओनरशिप रहिबा ट्राइबल भितरे ये गोटे थिला ट्राडिशन सेटा को तांको भितर डिवीजन क्रिएट कला लैंड सेटलमेंट आ जॉइंट जो ओनरशिप थिला सेटा को
हटि दिगला आउ जो माने जोटा कि कंपनी बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड को कौन ना ट्राइबल लैंड को सी एक्सटेंड कले भाई तुम्हें ट्राइबल एरिया अलग ये एग्रीकल्चर लैंड को से ट्राइबल लैंड जोटा थिला जो माने फरेस्ट फरेस्ट जमी चलती ट्राडिशन जमी से डिस्टर्ब कले ओके तामाने कौन जो एग्रीकल्चर लैंड जो करदेले ट्राइबल लैंड को सेठी नॉन एग्रीकल्चर लोक मैंने धीरे धीरे आसक लगे ये गोटे सिचुएशन क्रिएट होगा जमती ये देख लिखाई नॉन ट्राइबल पीपुल आसिले नॉन सॉरी एग्रीकल्चर नॉन ट्राइबल पीपुल आसिले देन नॉर्मली ट्राइबल लैंड रे कौन करथान से माने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करथांती तो तांकर जो मेन ट्रेडिशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेटा को मध्य बाधा सृष्टि हैला ओके सेटा को मध्य बाधा सृष्टि हैला सो ये जोंडे की लिखाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन सो ये इश्यूटा को आमे गुड फास्ट है कौन ना मेन लैंड ट्राइबल कैरेक्टर देन एक्सप्लोटेशन बाय द पुलिस एक्सप्लोटेशन बाय द पुलिस ट्रेडर मनी लेंडर जी कि सब बाहर थे पुलिस से ही लोकाली नथिला ट्रेडर भी बाहर थे आउ मनी लेंडर वाले बाहर थे सो ये बेसिकली जो ट्राइबल्स माने यांको को बहुत तांकर जो सफरिंग से माने जो ऑपरेस करते से बहुत माने राग थिला ओके देन तापर आसिले क्रिश्चियन मिशनरी मु कही 1813 पर एलाउ करागला चार्टर एक्ट 1813 कौन है ना क्रिश्चियन मिशनरी को एलाउ करागला क्रिश्चियन मिशनरी एलाउ कराला पर कौन ना से माने इंटरफेयर करिया लगे आमर कस्टम और ट्रेडिशन को से माने कहले भाई आमर कास्ट सिस्टम आमर जो प्रथा अच्छी आम बहुत अंधार रे अच्छू आम पाखे किसी नॉलेज ना ये सब आमको क्रिटिसाइज कले इंडियन आमर सिस्टम को कल्चर को देन तापरे बहुत सारा अपराइजिंग जो है से समय ये चाहे क्रिश्चियन मिशनरी देन चोआर अपराइजिंग कोल म्यूटिनी सांथाल रिविलियन भील रिवोल्ट ये सब देन फ्रंटियर ट्राइबल ये देखले गोटे कैरेक्टर देखले कहार ना मेन लैंड ट्राइबल देन आ गोटे फ्रंटियर माने जो माने हमें नॉर्थ ईस्ट कले बेसिकली कहूँ ओके फ्रंटियर ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ये भी तांकर रिवोल्ट भी बेसिकली टिके डिफरेंट मेनलैंड ट्राइबल देख जिते भी सब ये रिवोल्ट देखले चाहे कोल म्यूटिनी हो सांथाल हो भील हो चुआर हो ये सब सेम टाइप प्राय सामान रही चाहे टाइम एंड स्पेस अलग हो बट कैरेक्टर ऑलमोस्ट सामान अच्छी मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट जोड़ा कि देन फ्रंटियर भी तांकर भी गोटे प्रकार फ्रंटियर टिके अलग इश्यू फ्रंटियर कौन ना से माने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहती तांकर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जिते चलीगला सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस से चाहती एटी फॉरेस्ट बेस्ड न थाए मेनलैंड ट्राइबल मेनली फॉरेस्ट बेस्ड थाए एठी तांकर फॉरेस्ट बेस्ड किसी न थाए ओके सो ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल करने पे एमानकर नथिला बेसिकली सॉरी माने फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट बेस्ड नथिले माने फॉरेस्ट लैंड को कंट्रोल करने चाहते ओके कंट्रोल द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया and they continue for a longer time than the non-frontier tribal movements. Desanskritization movement also spread among the frontier. Sanskritization माने कौन बेसिकली जोटे कि आम सोशियोलोजी रे जी पढ़ो सोशियोलोजी जार ऑप्शनल अच्छी सोशियोलोजी ऑप्शनल मु स्टार्ट करिया जाउची 25 तारीख रु संस्कृताइजेशन बेसिकली कौन ना लेट से लोअर क्लास कास्ट अपर कास्ट को मूव करने चाहिए से भाया कल्चर से भाया ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए से भाया लाइफस्टाइल बचाई चाहिए डिसांस्क्रिटाइजेशन माने तार उल्टा ओके अपर कास्ट लोअर कास्ट टू अपर कास्ट देन अपर कास्ट को लोअर कास्ट ये डिसांस्क्रिटाइजेशन बेसिकली मूवमेंट ए माने सपोर्ट थिले और मूवमेंट बहुत लॉन्ग टाइम चलता देन खासी अपराइजिंग हो ओहम रिवोल्ट हो ये सब सेम कंट्रोल करने चाहते कुकीज ये तार एग्जांपल्स ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट देखिए से ट्राइबल आइडेंटिटी एंड एथनिक टाइज tribal identity so they lay behind the solidarity shown by the groups not all outsider were seen as enemies है ना या कैसे पुअर जी की पुअर जी लाइव करथला देयर मैनुअल लेबर और प्रोफेशन एट सोशली एंड इकोनॉमिकली सपोर्टिव रूल इन द विलेज से मान को ही आउटसाइडर हिसाब से देखना से को अलग छाड़ देती and the violence was directed towards the money lender and trader who are seen as a extension of the colonial government
एमानंकु एनमी भलिया देखुथांती कोमाने मनी लेंडर एंड ट्रेडर देन सिमिलरली तुमरो फर्स्ट फॉरेन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट ये पॉइंट गुड़ा मन रखिबो देले तुमको बहुत काम रे आसीबो ओके देन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट सो जी एक्चुअली रियली सीरियस पिला ये देखिबो वीडियो एवं शेयर करिवो सांग साथी भाई मान सहित कहना ये दीज आर वेरी बेसिकली वेल थॉट आउट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस. So common cause was resented against the imposition of laws by the foreign government that was seen as an effort at destroying the tribal's traditional socio-economic framework. Many uprisings were led by messiahs like figures, messiah like जोंटे कि तुम्हारो बिरसा मुंडा वगैरह. Okay. Then technologically backward. So the tribal uprising were doomed for beginnings. Given the outdated arms they fought against the modern weapons and techniques used by their opponents. ओके सो ये तुम्हें या भितर जानी पारिथुलो ये जिनस टेक्नोलॉजिकल ये देन सिमिलरली कंक्लूजन जे देखिबा सो इट इज एविडेंट दैट कॉलोनियल रूल इवन ड्यूरिंग एई समय मध्य ये बेसिकली न्यूमरस बहुत सारा अपराइजिंग ये सब देखिथिबो है एंड फाइनली तार क्लाइमैक्स थिला कोन ना रिवोल्ट 1857 ओके अगेंस्ट सो फाइनली फ्रीडम मूवमेंट यू बिगिन होली दिस. So these are very important questions. Then civil uprising रे देखिए peasant resistance against British rule आमे ये सब civil uprising that discuss the various peasant movement and their impact and that took place during the Indian freedom struggle. ये मोटे questions तो मु देली ये questions रा try करो समझते जवाब दवा पाई. ओके ये क्वेश्चंस रा समझते ट्राई करो जवाब देवाई. सो मु खाली इंट्रोडक्शन टा कही पिजान मूवमेंट माने टूटा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये तुमको गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे देली कि पिजान मूवमेंट इन इंडिया एरोज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड व्हेन इकोनॉमी पॉलिसी रिजल्टेड इन द रुइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री आ स्मॉल इंडस्ट्री जोटा कि धीरे धीरे ऑनरशिप या ओवरबर्डन हो गला तुम एग्रेरियन लैंड से लोकों को पिजेंट्री बहुत सारा लोन हो गला से माने दे पाले नहीं मेसिव डेट एंड इम्पोवरिजमेंट ऑफ पिजेंट्री. So the economic policy of British government used to protect the landlords and money lenders and exploited the peasant. जो peasant खाद्य अन्य दाता अन्य दौथला ताको ही माने एक्सप्लॉइट करथले. देन धीरे धीरे माने रिवोल्ट हेले इनजस्टिस अगेंस्ट. सो ये तो जोटा कि किसी पिजन रिवोल्ट बिफोर गांधीआन फेजेस जो इंडिगो रिवोल्ट है पवना तुमर मूवमेंट डेक्कन रायट्स गांधीआन फेजेस चंपारण गांधी निजे इनवॉल्व थिले मोपला 21 मालाबार होता मोपला. सो ये सब बारदली वगैरह ये सब होता लोक भर अवेयरनेस क्रिएट कला पिजन वॉइस सार नेशनलिज्म ग्रोथ रे मध्य ये हेल्प करछि. ट्राइबल मूवमेंट ये सब आम एबे ऑलरेडी देखि सारिछे. रेवेन्यू क्लासिफिकेशन ट्राइबल मूवमेंट जो देखा ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि 7 इटा मन रखि 3 फेजेस गोटेला 1795 रु 1860 ट्रेडिशनल सेक्शन. सो इट कोइंसिडेड विथ द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लीडरशिप फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्शन दोज प्रिविलेज और अंडरमाइंड. सिमिलर सेकेंड फेज है 1860 रु 1920 intensive colonialism coincided with mercantilism impacting the tribal economy, land and forest. Leadership from the lowest tribal. Then third phase है कौन ना tribal engaged in the nationalist, agrarian and separatist movement. Leadership from educated and outside. So these are तीनटा phases तुम्हें देखी दी परिवो तुम्हें मन रखी देवो very important तुम्हारे exam perspective रा. रिवोल्ट 1857 रे जोटे कि पीपुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट बिफोर आम जाचे तार रीजन कौन कौन सब देखी फैक्टर कौन दीज आर द कजेस तुम्हें चाहिए देखिपर. इकोनॉमिक कजेस पॉलिटिकल कजेस सोशियो रिलीजियस कजेस और अदर कजेस ये सब आम आज ऑलरेडी डिस्कसन कर जाइए ये गोटे क्रिस्प रे तुम्हें ये पाइज. ओके देन रिवोल्ट 1857 है बिगिनिंग है कौन कौन है ये डिटेल्स रे आमे तुम्हें जानिच या न जानिच जदि पढ़िबो याकू
वेरी इंपोर्टेंट। ये जो लीडर्स थे चाहे स्टॉर्म सेंटर कंकु बहादुर शाह हूँ या वक्त खान दिल्ली हूँ, हजरत महल कौथली लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कंवर सिंह, ये सब थिले, तांतिया तोपे कानपुर, ये सब थिले। तो ये गोटे क्वेश्चन आसीपे, व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड फेल्युअर ऑफ द रिवोल्ट 1857? व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड फेल्युअर ऑफ रिवोल्ट 1857? So lack of unified program and ideology, lack of unity among the Indians, ये major point. Then lack of support from the educated Indians, then military superiority of the British. ये point तुमको किसी मन रखा पड़ो। एंड तार कन्सेक्वेंसेस कौन रिवोल्ट 1857 हेलारे, ये भी गोटे क्वेश्चन आसीपे। व्हाट आर द कन्सेक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट 1857? कन्सेक्वेंसेस है चेंजेस इन द मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन, changes in the military organization, number of European soldiers increase करागला धीरे धीरे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करागला, नेशनलिस्ट फीलिंग प्रिवेंट करने चेष्टा करागला, ट्रांसफर ऑफ पावर हैला कौन ना क्राउन रूल स्टार्ट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैला एवं वाइसरॉय करागला, ये सब देखिए। ओके, सो दीज आर बेसिकली। देन लास्ट क्वेश्चंस एटा तुम निजे लिखिबो कि रिवोल्ट 1857, Revolt 1857 is also called Sepoy Mutiny. Revolt 1857 is also called Sepoy Mutiny. Considering the statement, discuss the reason for the Revolt 1857 as well as failure. तो ये गोटे क्वेश्चन दीटा को मुझे अलरेडी कर तुम्हें मैंने यहाँ आराम से कर राइट। देन आउट यहाँ गोटे वेरी बढ़िया क्वेश्चन कि हाउ एक्सप्लेन हाउ the uprising 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policy towards colonial law, जोटा कि मु consequences लिखि नथली, consequences लेख लिखिकी समस्ते टेलीग्राम में जॉइन कर पठाओ क्वेश्चन, जदि हो तो आम पॉसिबल हम आम देखीदेबू। ट्राए कर जो मैंने एनरोल करा चाहूँ ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल वगैरह ये सब आम करूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस। सो आज बहुत सारा इश्यू आम देखिले। आई होप तुम्हें एंजॉय करते सेशन समस्ते ये वीडियो को शेयर करते सांगसाथी सहित। गोटे पूरा कंक्रीट रिवोल्ट 1857 क्वेश्चन आसे ओपीएससी हो या अलग एग्जाम हो, ये सब ये क्वेश्चन आसे, आपण मैंने ये पार्ट को केबे भी स्किप करें ना। सो ट्राए करंतु ये क्लास को आपण भल से देखंतु, आउ थे जरम ट्राई रिवाइज करंतु। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय जगन्नाथ, नमस्कार। इफ एनी डाउट लेट मी नो।